सो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा हार्ड है करना, बट इट कैन बी डन. मतलब यार ये लाइक जी मीन्स टाइप का नहीं है ये. बहुत ऐसी ऐसी चीजें इन्वॉल्व करता है ये कि इसको जी मीन्स टाइप का मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता. चलो ठीक है, करते हैं. तो पहली चीज, थिंग इज दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v. अगर ऐसा मूव कर रहा है देन इट विल आल्सो मूव विद x वेलोसिटी एज v, राइट. y वेलोसिटी इसके अभी भी अननोन है. सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि a इज मूविंग विद वेलोसिटी v लाइक दिस गाय इज मूविंग विद वेलोसिटी v लाइक दिस. ये u से मूव कर रहा है, u कोई भी इसकी वेलोसिटी होगी, वी डोंट नो. सो इसे y वेलोसिटी ऐसी है. दिस इज मेकिंग 90 minus थीटा. थीटा वेरिएबल है यहाँ पे. 90 minus theta over here, and yeah, and this angle will be theta, right? So by string constraint, what we can do is just say u cosine theta is equal to 2v sine theta, right? Which means that u is equal to 2v tan theta, right? और अपने को अब एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है. सो व्हाट वी एक्चुअली हैव टू मैक्सिमाइज इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बेसिकली, राइट. या मतलब वो हाफ एम वी स्क्वायर वो एडिशन हो के ऐसा हो जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज. अपने को इसकी एनर्जी को मैक्सिमाइज करना मतलब अपने को पूरी चीज को मैक्सिमाइज. या व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू इज वी हैव टू मैक्सिमाइज जस्ट v स्क्वायर. बट जो टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी दिस थिंग, राइट. या एंड मतलब उससे प्रोपोर्शनल रहेगी, राइट. ओके, इसको लिख देते हैं ना, हाफ एम टाइम्स ये सब, दैट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी. दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी का चेंज. सो वो कितना हुआ होगा. सो इट्स लाइक एम जी. ये तो चेंज हुआ नहीं, इसका चेंज कुछ भी नहीं हुआ, इसका चेंज हुआ है. सो एम जी टाइम्स एल कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा नॉट, क्योंकि इनिशियली कुछ भी था. सो इसके बाद सी माइनस सी नॉट लिखा हुआ है, बाय द वे. या अब क्या, ये एम कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज दिस, इट्स लाइक 2v स्क्वायर. सो m times of v square plus u square upon 2, but u is just this thing, इसका square upon 2 is like 2v square t square, right. So ये m तो गया ना. v square times 1 plus 2t square is equal to gl times cosine minus cosine theta whatever. So v square is just equal to gl times c minus c naught upon 1 plus 2t square, right. अब एक बात सोचो, जैसे से थीटा, तो अपने को इस चीज को मैक्सिमाइज करना है बेसिकली, राइट. तो अब थीटा जैसे कम हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, ये जो डिनोमिनेटर है वो कम हो रहा होगा बिकॉज इट्स कमिंग क्लोजर टू जीरो. और कोसाइन की वैल्यू बढ़ रही होगी. सो एज थीटा डिक्रीजेस ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है, राइट. विच मीन्स कि थीटा इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू मैक्सिमम अटेन कर लेगी, आई गेस. या सो थीटा इक्वल टू जीरो इज व्हेन दिस विल अटेन द मैक्सिमम, और उसके बाद में नेगेटिव हो जाएगा एंड व्हाटएवर, तो वो स्टिल काम करेगा वैसे. या द मेन पॉइंट इज कि ये जो पोजीशन रहेगी एट दैट पॉइंट इज गोना अटेन द मैक्सिमम, तब मैक्सिमम वेलोसिटी है, राइट. या सो व्हेनेवर जस्ट एंड अपने क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द सिस्टम, राइट. ऑफ कोर्स बस ये सिस्टम, बस ये इक्वेशन में सब कुछ डाल देते हैं अपन एंड विल गेट द थिंग. या फिर एक इस इक्वेशन में डाल देते हैं, राइट. या so theta equal to 0, just v square is equal to gl and then 1 minus cosine theta. So square root of gl 1 minus cosine theta, that is the maximum velocity of this block. Yeah. So ये होगा A. Next. Displacement of the center of mass A plus B system till the string becomes vertical, right. तो vertically displace हो रहा है, right. Yeah, sure. What will that be? तो horizontal displacement तो है नहीं कुछ, vertical कितनी है, तो ये ऐसा आ चुका है ये तो. yeah, okay, fine. And so initially क्या है, initially this is L upon 2 cosine theta, right. That's this height. और अब क्या है, it's L upon 2, just L upon 2, right. So there we go, L upon 2 times 1 minus cosine theta, that's the displacement, right. So 21 का आंसर B. Next 22. Okay, three blocks are initially placed as shown in the figure. Block A has mass m and initial velocity v to the right. तो A का मास दिया है
velocity to the right, block B with mass m and block C with mass 4m. ये लिखा तो नहीं इसमें, ठीक है इसको कर देते हैं. So A, B, C masses, initial velocities, final velocities. Okay, तो block A का क्या mass है? m. Velocity v to the right. Okay. Block B has mass m as well. और क्या है? 4. Block C का mass 4m. Both at rest. Okay. Neglect friction. All collisions are elastic. The final velocity of block A will be. अच्छा. Okay, so पहले तो ये इसे collide करेगा and then it will just impart the whole velocity to this thing. So इसमें u1 लिखता हूँ. So मैं u0 बोल दूंगा, इसको मैं u1 बोलूँगा. पहले collision के बाद में A की velocity क्या है? 0. इसकी velocity v है, इसकी velocity भी 0 है. दूसरे collision के बाद में जब B और C collide करेंगे, it's B like that and C is of mass 4m, right? So जो and it's elastic collisions, right? Okay, so momentum या फिर तुम वो भी कर सकते हो, फिर जानो ना momentum कितना. So impulse, what is the impulse? It's basically 2m1 m2 upon m1 plus m2. So 2m times 4m upon 5m times u1 minus u2. So u1 minus u2 is going to be like this minus that, right? Yeah, which is just v. So that's the impulse, right? ये कितना हो जाएगा? 8 upon 5 mv. Then this thing upon m, that's just 8 upon 5 v. तो b के लिए क्या हो गया? 8 upon 5 v towards left अपने को add करना है. So basically v minus 8 upon 5 v, which is negative 3 upon 5 v. That's the thing. अपने को फर्क नहीं पड़ रहा c का हो क्या रहा है. Okay. उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये a के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो फिर ये पूरी वेलोसिटी को दे देगा, राइट? सो 3/5 of v to the left, which is 0.6 to the left. Yeah. So A is the answer. Next question. 23rd. As shown in the figure, a body of mass m moving vertically downward with speed 3 meters per second hits a smooth fixed inclined plane and rebounds with velocity vf in the horizontal direction. If the angle of inclination is 30 degrees, the velocity vf will be. ये ऐसा हुआ and then okay, यहाँ पे इसको रोका हुआ है. हाँ, fixed inclined plane, right? Yeah. Just normal velocity ही इसमें रह सकती है. And right, okay, it rebounds with a velocity of vf in the horizontal direction, right? So इसका मतलब क्या है कि जो x velocities है those must be the same if the angle of inclination is 30 degree whatever. Yeah, just do the thing. तो ये क्या हो जाएगा? ये 60 degree है and this thing is finally like 30 degree. Okay. तो ये जो है किस velocity से जा रहा है? 3 meter per second. And finally अपने को पता नहीं क्या है, right? Yeah, so v cosine 30 degree, that's gonna be like v square root 3 upon 2. That's equal to 3 times cosine of 60 degrees. Yeah, which is 3 times 1 upon 2. So ये cancel होता है and then just get square root 3 meter per second. Yeah. 23rd का answer B. Next question, 24th. 24th is two massless strings of length 5 meter hang from the ceiling very near to each other as shown in the figure. क्या? तो massless strings. Okay. Two balls A and B are attached to the string. The ball A is released from rest at height 0.45 as shown. ठीक है. Okay. Immediately after the collision, the kinetic energy of the ball is 1 joule. The velocity of the ball A just for the collision is. क्या ये इलास्टिक है? नहीं, बिकॉज फिर अपने को वेलोसिटी पूछते हैं क्यों ये लोग, राइट? काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है एंड देन मास ऑफ दिस गाय, ओह गॉड ये बहुत घटिया होने वाला है. करना तो पड़ेगा अपने को. सो हाफ एम वी स्क्वायर इज लाइक 1 अपॉन 4 वी स्क्वायर इक्वल टू 1, वी इज इक्वल टू 2. तो बी जो है वो 2 से जा रहा है, राइट? तो उसका मोमेंटम कितना हुआ? सो 2 टाइम्स ऑफ क्या? 0.5 यानी कि 1 मोमेंटम इसमें इम्पार्ट किया गया था, राइट? आई गेस सो. इसका मतलब है कि 1 मोमेंटम इसमें भी इम्पार्ट किया होगा और इसमें अपन वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं, आई गेस, राइट? सो इसकी अपने को क्या ढूंढनी है वैसे?
velocity of ball A, right? इसकी पहले अपन kinetic energy ढूंढ लेते हैं. So kinetic energy will just be like mgh initially जो इसका था, right? And then ठीक है ना, velocity ढूंढ लेते क्या जा रहा है. P क्या था अपना? P was just 1 basically, right? Because the velocity 2 3 and everything. Of course, cool. इसकी velocity क्या है? So mg is equal to half mv squared. V is just square root of 2gh, so square root of 2 times of 10 times of h. H कितना है? 0.45, right? Which is लेकिन अभी ले से छोड़ दो. So 4.5 times is like 9, so 3 is that velocity. P upon m, m कितना है? 0.25, 1/4. So 4 directions of 1 in this direction, right? So 1 to the left. 24th का answer D. Next. 25th. Okay, the system of the wedge and block connected by massless spring as shown in the figure is released with the spring in its natural length. Okay, friction is absent, maximum elongation in the spring will be. ये fix है ना? ठीक है. System of the wedge and block. Wait, अच्छा ये fixed है कि नहीं है? Wedge fixed नहीं है क्या? कुछ बताओ तो मुझे, ये fixed है कि नहीं? System of the wedge and block. I think wedge is not fixed, right? Its natural length, right? Friction is absent, maximum elongation in the spring. Okay, this is bad, not good, not good. ठीक है ना. For maximum elongation, what should happen is कि ये इनकी energies जो रहेगी वो minimum रहनी चाहिए. So I know usually मुझे पसंद नहीं रहता है वो सब करना, but ठीक है ना, इसके related velocity 0 कर डालो. This is awful, really awful, right? और कोई तरीका है क्या आपके पास में? नहीं, नो अदर वे, राइट? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं अपन, सिर्फ वर्टिकल के बारे में देखते हैं पहले. तो ये जो है या ओके, इसको तुमने छोड़ा एंड देन राइट. तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी मस्ट बी 0 आई गेस, बिकॉज वो मिनिमम काइनेटिक देता है अपने को, राइट? हाँ, वो उसी पे आ रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए. दैट्स द ओनली थिंग. ऑफ कोर्स, लेट्स डू दिस, राइट? लेट्स जस्ट डू दिस एंड जस्ट रिलीज बेसिकली. हाँ, तो ये अभी भी 0 पे रहेंगे. वेट, व्हाट? नो, समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस. हाँ, ये 0 पे रहेंगे, बट द थिंग इज कि ये नीचे जा चुका है. ओके, सो इट गॉट हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कितना h कितना होगा इसका. सो नेचुरल लेंथ पे था, अपने x मूव किया एंड देन लाइक क्या कंपोनेंट है उसका. सो ये 37 डिग्री रहेगा एंड देन sin of 37 degrees is what we look for. So 3/5 of x, right? That's what h will be. Yeah, I guess that makes sense. Like this, right? Okay. So इसका मतलब है कि x is just equal to ये तो गया 6 mg upon 5k. Where is that answer? It's option B. I don't know ये correct है कि नहीं, but no. So solving it fast, अपन ऐसे कर रहे हैं. 26. The blocks A and B shown in the figure have masses MA is equal to 5 kg and MB is equal to 4 kg. Okay, system is released from rest. The speed of B after A has traveled a distance of 1 meter along the incline. Okay, A का मास कहाँ पर है? चाहिए. Okay, and B का मास 4 kg. The system is released from rest. The speed of B after A has traveled distance of what? A ट्रैवल किया डिस्टेंस 1 मीटर लाइक दिस. ओके, एंड देन फिर बी की स्पीड चाहिए अपने को, राइट? ठीक है, तो ये 1 मीटर ऊपर गया. हाँ ठीक है ना, चेंज इन. हाँ समझ गया, मैं समझ गया. नो बिग डील, इट्स डूएबल. हाँ बट बहुत लंबा होगा ये और अच्छा तरीका है कि नहीं इसमें? आई डोंट थिंक इसमें कोई और अच्छा तरीका है. फाइन. सो जो भी इसकी वेलोसिटी होगी बी की, एक ही वेलोसिटी से 2 टाइम्स होगी, राइट? सॉरी. So total kinetic energy कितनी हो जाएगी? Total kinetic energy will just be like half mb times v square plus half ma times 2v का, so it's like okay 4v square I guess.
and this must be equal to the change in the potential energy. So ये कितना नीचे गया होगा? This is 1 meter like that, so ये 0.5 meters नीचे गया, right? So yeah, it's equal to mb times g times 0.5 plus, so ma, oh by the way it's negative because ये उल्टा हुआ ना, yeah, minus ma times g times, so yeah, ये होगा height of course, which is just that much. Yeah, sure. Just 3/5. 3/5 is the answer. 0.6 like that. I guess that makes sense. चलो अब MA MB को इसे put कर देते हैं, we'll get the thing done. So MA is 5. It's like okay 5 upon 2B square plus, और ये कितना है? MB is 4. So 16 upon like, okay, 16 upon 2 which is 8B square. That's equal to MB is once again just 4. 4 times of G is 10. ये 5 times of 4 right? Which is 20 minus MA is 5. 5 times of 4. That's like 30. Wait, what? No, that's not making sense. It must have been like 0.5 and M is 4. Wait, P छोटा मास है. Oh, अच्छा ये उल्टा जा रहा है. Of course. Right. तो बस इसको इन्वर्ट कर डालना. ठीक है, तो इसका नेगेटिव कर दो, इसका पॉजिटिव कर दो. Yeah, easy as that. So ये हो जाएगा 10 basically. Right? Yeah. अब क्या है ये 16 plus 5 is 21 upon 2b square is equal to 10, मतलब कि b square is equal to 20 upon 21, so इसका square root, right? So v is equal to 2 square root 5 upon square root of 21, और वो नहीं है यहाँ पे. हाँ, कुछ भी गड़बड़ हुई इसमें. क्या गलत हो गया इसमें अपना? एक बार पूरा वापस करते हैं. ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है? Has descended down by how much? ये 1 से नीचे गया है, and that like with sine of 37 is supposed to be 3/5, right? Wait, वो 1 मीटर है कि कितना है? 1 मीटर ही है ना, of course, right? So that's why 0.6, and yeah, I got one. MB is 4 and then got G और यहाँ पे 0.5 है because ये that's 1 meter की 1 meter नीचे गया, so इसने 0.5 ऊपर गया होगा, of course. What other way do you have? That's right. ये क्वेश्चन सही है in fact. Okay, which means that MB, which is like just 4, right? तो ये जगह 2. oh अच्छा, ये अलग है थोड़ा सा, मैंने कुछ भी गलत कर दिया इसमें. Okay, plus and then MA is just 5. ये जगह 2 times of 5 is 10. 10 b square is equal to G times MA कितना है? MA is 5. 5 times of 0.6 is like 3 minus MB is 4 times 0.5 is just 2. So this is equal to G. मतलब V is equal to square root of G upon 12, which is square root of G upon 2 square root of 3, which is answer C. Next question, 27. Uh, 27. Potential energy for a field F is given by this thing. Okay, force acting on the particle position. ठीक है, potential दिया है, force निकालो. So negative of this thing, partial upon partial x of 1. और क्या है ये? Of cosine x plus y, right? Let's do this thing. It's supposed to be negative. अच्छा, so this x, हाँ वो negative positive हो जाएगा in fact. The sine of x plus y, and this is also like sine of x plus y. Cool, that makes sense, right? Yeah, force acting on the particle, right, at this point. So क्या है ये? X plus y कितना हो गया? Pi upon 4, so it's just 1 upon square root को बाहर निकाल लो. Then you got 1 and 1, right? There we go. So 1 upon square root 2 times I hat plus j hat. So 27 का answer B. Next question, 28. 28 is two masses m and 2m are placed in a fixed horizontal circular
smooth hollow tube as shown. Okay, the mass m is moving with speed u and the mass 2m is stationary. ठीक है, इसमें this is bigger and then this is like stationary. After that first collision, the time elapsed for the next collision. Question of friction. Distribution system. Fixed horizontal circular. Okay, तो ये जो है ये okay समझा मैं. Right, the mass m is moving with speed u and the mass 2m is stationary. After the first collision, elastic collision की क्या है? So question of distribution of the है, it's just 1/2 fine. The time elapsed for the next collisions. तो ये मास m है, इस मास हाँ ठीक है ना, कर लेंगे going with u you say. So m to m, so ये अपने masses है, अपने velocities क्या क्या है, initially just u and 0, finally क्या हो जाएगी, this u v, right, मतलब ये initial ये final, this is mass, right, finally क्या velocities क्या speeds हो जाएगी, right. So ये u से जा रहा था like, हाँ तो अब ये चेंज हो गया होगा, now okay ये 2m है, this is m है, so अब ये कितने से जाएगा, it's gonna be like u minus 2 times of something, so 2v बोल दो, and it's gonna go with v, right, yeah. And constant restitution is e, right, so separation कितना हो रहा है इसमें, it's trying to separate, it's trying to not separate, so okay 3v minus u, and that is equal to 1/2 times u, right, yeah, so 3v is equal to 3/2 times u, मतलब कि v is equal to 1/2 u, that should be the thing. So इसका मतलब है कि ये just 0 हो गया, wow, okay, awesome, अब ये 0 पे हो गया and then it's just moving with 1/2 u, right, okay, very weird. तो अब क्या time elapsed for the next collision, ठीक है ना, समझ गया, it's gonna be 2 pi r upon the speed, so 1/2 u, 4 pi r upon u, so answer is B. Next question. 29. 29 is a bob is attached to one end of a string, and other end which is fixed to a peg A. The peg here, this is a bob. Okay. What? ये bob है, and the other is attached to a peg, but अच्छा peg A. Okay, fine, fine, fine. 30 is the horizontal. Okay. On the circular path of the bob in vertical plane, there is a peg B at symmetrical position. Okay. ठीक है. If VC, VA with the minimum speeds in clockwise and anti-clockwise directions respectively, हाँ, what? Wait, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? Clockwise and anti-clockwise क्या बोल रहे हैं? Given to the bob in order, अच्छा, in order to hit the peg B, then ratio of PC. So the thing is like, okay, wait, what? In order to hit the peg B. Wait, isn't like VC 0 because ये symmetric position पर है, तुम अगर इसे छोड़ देते हो, oh, it's gonna fall down directly, huh? Yeah, okay. और जब ये नीचे गिर जाएगा at that point फिर ये impulse लगाएगा and then it will change the velocity. You don't want that to be happening, right? So तुम्हें throughout ये पूरा जो है, right, this in fact should be in the circle, right? Okay, understandable. So throughout ये till this 30-degree thing, it has to be on the circle. Let's do it. जब ये angle theta है, you got gravity acting like this, you got tension like that, and so m, yeah, like omega square r, or I can see just m v square upon r. That's this thing. अच्छा, उसके बाद में v तो बढ़ने वाला है ना, so yeah, and tension is also not right. Okay, अब वो कम हेल्प करेगा एंड देन फाइन, ठीक है, बाद में वापस हेल्प करेगा नहीं, अच्छा वो फिर हेल्प नहीं करेगा, वो उसको और बिगाड़ देगा, राइट.
फिर तो टेंशन अपने को लगने वाला है, देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन द सर्कल। बस यहाँ पे ये नहीं था, दैट्स द थिंग, टेंशन मस्ट बी देयर, दैट्स ऑल वी हैव टू डू, राइट। या सो यहाँ पे अपन क्रिटिकल कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे टेंशन एक्चुअली में नहीं है, but in that case this is what's doing the thing, right? तो ये 90 plus theta is just mg sin theta, that should तो टेंशन को जीरो अभी अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, mg sin theta that must be equal to m omega squared r या फिर m v squared upon r, whatever. There we go. So you got the velocity v clockwise का square is equal to g r sin theta, right? And then अगर अपने को एंटी क्लॉकवाइज करना है, then at this point yeah, right. So ये कितने से चेंज होने वाला है, 6 डिग्री से, yeah. So right, it's gonna change by r upon 2, I guess. So mg r upon 2, देखो ये तो सस्टेन करना ही पड़ेगा. Okay, that's equal to half m, no, not that actually. This is equal to what? Half m times, so यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, what you want is that mv squared upon r, at that point that must be actually mg, that is your v square must just be g times r, so half m times gr minus u squared, right? That's the thing. तो ये गया यहाँ पे gr upon 2, यहाँ पे gr upon 2 है, कुछ भी गलत हो गया इसमें, ये उल्टा है सॉरी, u square minus gr, so u square is equal to, ये 2 तो हटा दो, this will be equal to 2gr, so we square root 2gr and this is just square root of gr sin theta, right? Okay, theta क्या है? Theta is just 30 degree, so you just gotta put that in there, 1 upon 2. This is a square root of gr upon 2 or the square root of 2gr, which is like 2 is to 1, right? Oh, अच्छा 1 is to 2. So 29 का answer C. Next 30. Construction. Right. A train a train of mass m is moving on a circular track of radius r with constant speed v. Okay, circular track r, constant speed v, train is moving. The length of the track is half of the perimeter of the track. Achha, the linear momentum of the train will be linear momentum. Oh, okay, right. Linear momentum of the train will be. अगर तुम लोग ऑलरेडी इतने लास्ट में नहीं मतलब जो देखते होते तो फिर मैं ये सब एकदम बेसिक से करता, बट अब क्योंकि यानी प्रॉब्लम मुझे पता है, just use complex number for this thing. So I e power I theta is the direction of the velocity, right? So you want to have dm times जो speed है, speed कितनी अपनी v, and then dm is going to be like lambda d theta, right? Lambda r d theta. Right, अपने को ये इंटीग्रेशन करना है from theta equal to 0 to pi, and there we go, you will find the momentum in that direction, in that case, right? The momentum of the train will be suitable. So ये इस केस के लिए तो ये 0 से pi तक जा रहा है, yeah, right. Lambda r v integration of 0 to pi, and then you got iota e power I theta d theta. So this will just be lambda r v, और ये है antiderivative of e power I theta. So yeah, it's gonna be like e power I pi is just -1 minus e power I times 0. So -2 lambda r v, which corresponds to hey, यहाँ पे negative कैसे आ गया? Something went wrong or something? कितना आवाज हो रहा है यार? Is that right or not? The velocity is going like this, right? ये ऐसा है, and of course it's correct. So ये जो velocity, sorry, ये जो momentum है, it's like this actually. It's pointing like that because it's negative and along the real axis. Okay, lambda को इससे put कर देते, right? So just multiply by pi, so 2 pi r lambda. I should say pi r lambda. That's what the thing will be. So it's equal to -2 और फिर mass upon pi and then times b. So 2 mv upon v, that's the momentum, right, in the left direction. 30 का answer B. Next, let's go to 31.
Okay, a cannon shell moving along a straight line bursts into two parts. Just after the burst, one part moves with momentum 20 meters per second. क्या है यार, अब तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं. A cannon shell moving. Oh God. Okay, I guess we should stop now. See you in the next video.